Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alikum. Welcome you all to learn Chinese language with Chinese language made easy. I'm Muhammad Shahid and today we are going to learn a sentence in Chinese language that is Ni long lama, ni long lama, ni long lama, ni long lama. Are you deaf? Are you dumb? So usually it will have different meanings in different contexts. So you have to understand both. In English also, if we are trying to say, if you're trying to address someone that are you deaf, so it's impolite, but we can say it if you are mad at someone. अगर हम किसी पर गुस्सा है तो इंग्लिश ज़बान में भी उर्दू ज़बान में भी हम ये कहते हैं कि क्या तुम बहरे हो. तो इसका ये मतलब नहीं होता. अगर हम इस तरीके से इसको समझे कि उसको सुनाई तो दे रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहा, तो हम गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम बहरे हो. सो सिमिलरली वी कैन से इट इन चाइनीज़ नी लॉन्ग लमा, नी लॉन्ग लमा. आर यू डेफ, आर यू डम. At the end I will play a clip of a Chinese movie and you will see it by yourself that how we can learn this ni long lama. Okay, now I'll tell you how to write this whole sentence in Chinese. I have already written it, but in order to learn the strokes, अगर आपको इस लिखना सीखना है तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को ख़त्म होने तक देखें. तो कैसे लिखेंगे, और ये जो पार्ट्स है बहुत सारे तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं. इसको हम नी कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ. वी कॉल इट तुम, यू, नी. एंड हाउ वी कैन राइट दिस, you can see it by yourself. Ni long lama. Long la is a particle that we use with a lot of words in Chinese language, and usually it means or it indicates the completion of an action. But here as we are calling that person is if you are deaf, so it means that he is already unable to understand you, so we are using this particle with long. So long la, long la. It means are you already deaf or dumb, dull witted, कम अकल, कुन ज़हन. ठीक है, जिसकी कोई अकल नहीं है, आप उसको कोई बात समझा रहे हैं, आप उसको कोई बात बता रहे हैं और वो सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, तो ये आप इस तरीक़े से कह सकते हैं. लेकिन इसका एक और मतलब भी है, कोई आप कोई बात कह रहे हैं और कोई समझ नहीं रहा, मतलब कि कोई सुन ही नहीं रहा, तो आप पोलाइटली कह सकते हैं कि नी लॉन्ग लमा, नी लॉन्ग लमा. आर यू डेफ, आर यू डम. क्या इन दैट केस यू कैन से आर यू डेफ. ओके, but if you are saying it are you dumb, so it means that he is lacking the intelligence, he is a dull witted person, kam aqal, kun zehn. ठीक है. So in one context we can call it deaf if someone is really a deaf person, and in one sense we can call it dumb if the person is a dull witted person. He is listening to you but he is not understanding what you're trying to say. So ni long lama, and we already know this one a lot. You would have seen this particle in a lot of Chinese sentences. It is used at the end of a Chinese sentence to indicate that the sentence is an interrogative sentence. Interrogative sentence. सवालिया जुमला, जुमले को सवालिया बना देता है. Now I'll play a clip and you'll see and you will listen to this sentence by yourself.
Enjoy the video, learn Chinese with Chinese language made easy. See you in a next video. Also, I want to tell you that in that video clip there is another sentence which you need to understand. So watch the next video also, which I'll upload, and it will be about another topic. So see you in the next video. 再见, Allah Hafiz. 把这个给我擦了。我让你擦了，你聋了吗？